Okay, dear students, in last lecture, some theoretical points, real line, interval, types of interval study, and exercise 4.1 question number 1 is completed. Now today will be start another one theoretical point. Puncture delta neighborhood of A. जो definition delta neighborhood of A की थी वही है as it is. Some words are changed. If A belongs to R, यानी कि value of A is a real number and delta is a non-negative real number. Delta क्या है? Non-negative real number, यानी कि वो negative number नहीं है. Then the open interval in bracket A minus delta comma A plus delta less in curly bracket A is called a punctured delta neighborhood of A and it is denoted by n star A comma B. ये बहुत बार शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आ गया है साइन. ओके, punctured delta neighborhood of A as it is definition of delta neighborhood of A only forwards change is minus in curly bracket A. ओके, जो वैल्यू ऑफ A उसको उसमें काउंट नहीं करनी. इट इज़ कॉल्ड पंक्चुअल डेल्टा नेबरहुड ऑफ A. इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड सिलेबस में नहीं है, सिर्फ उसकी डेफिनेशन एंड साइन वही यूजफुल है शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए. क्लियर? नाउ टुडे नेक्स्ट कंटिन्यू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 1. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इंटरवल एंड नेबरहुड फॉर्म. यानी कि आपको जो फॉर्म दिए वो क्या होगा? मॉड्यूलस फॉर्म. उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? इंटरवल एंड नेबरहुड फॉर्म. सो फर्स्ट इज गिवन इन मॉड्यूलस x minus 2 लेस देन 0.01 ये दिया हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयरिंग करेंगे. So comparing in modulus x minus 2 less than 0.01 with modulus form. तो हमारा modulus form क्या है? In modulus x minus a less than delta. x minus a less than delta. तो अब चेक करो, ए के प्लेस पे क्या है? वैल्यू 2 एंड डेल्टा के प्लेस पे 0.01. सो वी गेट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 2 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0.01. बस ये आपको समझना है. बाकी तो आप जो फॉर्म है फॉर्मूला राइट करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा. आपको फर्स्ट क्या बोला है क्वेश्चन में? एक्सप्रेस इंटरवल एंड नेबरहुड फॉर्म. तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट इंटरवल फॉर्म. सो राइट डाउन इंटरवल फॉर्म. द इंटरवल फॉर्म क्या है हमारा? ये इन स्मॉल ब्रैकेट ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा. डन. नाउ नेक्स्ट पुटिंग बोथ द वैल्यूज ए एंड डेल्टा. So new line, write down putting A is equal to 2 and delta is equal to 0.01. अब क्या? तो जो क्वेश्चन है मेन वो हम राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट करेंगे. इज इक्वल टू पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन. सो इन मॉड्यूलस x minus 2 less than 0.01 is equal to in bracket value of A 2 minus 0.01 comma 2 plus 0.01. Now next step using KLC 2 minus 0.01 your answer is 1.99 to 2.01. ये हो गया आपका इंटरवल फॉर्म. नाउ नेक्स्ट अनदर फॉर्म फाइंड आउट for the neighborhood form. Neighborhood form. नेबरहुड फॉर्म क्या है हमारा? n in bracket
a comma delta, simple for me. Now putting both the value, so putting a is equal to 2 and delta is equal to 0.01. Now next, write the equation in modulus x minus 2 less than 0.01 is equal to capital N in bracket value of a2 and delta is 0.01. ये हो गया आपका नेबरहुड फॉर्म. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2, second question is given in modulus x plus 5 less than 0.1. In modulus x plus 5 less than 0.1 is given. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था जब +5 हो तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी आपके नेगेटिव -5, क्योंकि माइनस माइनस से क्या होगा प्लस. सो यार राइट डाउन नेक्स्ट कंपेयरिंग in modulus x plus 5 less than 0.1 with modulus form x minus a less than delta, we get a is equal to -5 and delta is equal to 0.1. Okay. Both the form find out, interval and neighborhood form for the question number 2. So first write down interval form. So interval form आपका क्या है? In small bracket a minus delta comma a plus delta, both the values putting a and delta. So new step, putting a is equal to -5 and delta is equal to 0.1. Now next step, in modulus x plus 5 less than 0.1 is equal to -5 minus 0.1 comma -5 plus 0.1. Now next step, -5 minus 0.1, your answer is -5.1, comma -5 plus 0.1, your answer is -4.9. Check it. Done. Now second, neighborhood form find out. So neighborhood form is equal to capital N in bracket a comma delta. ये है आपका neighborhood form. Now write the values. So putting a is equal to -5 and delta is equal to 0.1. Now next step, in modulus x plus 5 less than 0.1 is equal to capital N in bracket -5 comma 0.1. Okay, so you are completed for the question number 2, sub question number 1 and 2. Now next in question number 3, okay, question number 2, sub question number 3 is given in modulus less than 1/3. क्या दिया है? In modulus less than 1/3. इन प्रीवियस लेक्चर हमने बोला था
only for modulus x यानी कि value of a it means 0 null set. So write down comparing in modulus x less than 1 by 3 with modulus form x minus a less than delta, we get a is equal to 0 and delta is equal to 1 by 3. Done. Next two form find out interval and neighborhood. So interval form is equal to, in small bracket, a minus delta comma a plus delta, putting both value a 0 and delta 1 by 3, putting a is equal to 0 and delta is equal to 1 by 3. Now next step, given to question, in modulus x less than 1 by 3 is equal to 0 minus 1 by 3 comma 0 plus 1 by 3. So now next step, 0 minus 1 by 3, your answer is 1 by 3 negative, and 0 plus 1 by 3, your answer 1 by 3 positive. Another form, neighborhood form find out. So neighborhood form is equal to capital N in bracket a comma delta, putting both value putting a is equal to 0 and delta is equal to 1 by 3. Now next step, modulus x less than 1 by 3 is equal to capital N in bracket 0 comma 1 by 3. So question number 3 is completed. Now next, in question number 4, in modulus x plus 3 less than 0.15 is given. In modulus x plus 3 लेस देन 0.15. अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 2 में, प्लस इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव, -3 आएगा. राइट द सेंटेंस कंपेयरिंग इन मॉड्यूलस x plus 3 लेस देन 0.15 with the modulus form in modulus x minus a less than delta. So we get a is equal to -3 and delta is equal to 0.15. And delta is equal to 0.15. Now another next two form find out. First, interval. So interval form, write the equation interval form in small bracket e minus delta comma e plus delta, putting both the values a and delta. Now next step, putting a is equal to -3 and delta is equal to 0.15. Now next step, in modulus x plus 3 less than 0.15 is equal to, in small bracket, -3 minus 0.15 comma -3 plus 0.15. Now next step, -3 minus 0.15, your answer is -3.15. -3 plus 0.15, your answer -2.85. And another next form,
neighborhood form, capital N in bracket a comma delta, putting both the values a and delta. Next step, putting a is equal to -3 and delta is equal to 0.15. Now next step, in modulus x plus 3 less than 0.15 is equal to capital N in bracket -3 comma 0.15. So here completed for the question number 2 is completed. Now next, in question number 3, question number 3, सब क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या स्टडी किया हमने? नेबरहुड फॉर्म इज गिवन, फाइंड द इंटरवल एंड मॉड्यूलस फॉर्म. सेकेंड, मॉड्यूलस फॉर्म गिवन, फाइंड द इंटरवल एंड नेबरहुड. एंड लास्ट इज गिवन टू इंटरवल फॉर्म एंड फाइंड द मॉड्यूलस एंड नेबरहुड फॉर्म. Express the following in modulus and neighborhood form. Okay, so first question is given 3.8 less than x less than 4.8. 3.8 less than x less than 4.8. अब जनरली इंटरवल फॉर्म में क्या रहता है? ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा. तो ए माइनस डेल्टा की वैल्यू क्या हुई? 3.8 एंड ए प्लस डेल्टा की वैल्यू क्या होगी आपकी? 4.8. सो नाउ राइट कंपेयरिंग 3.8 लेस देन x लेस देन 4.8 with interval form with a minus delta comma a plus delta, we get a minus delta is equal to 3.8 first equation and a plus delta is equal to 4.8 for second equation. यानी कि दो इक्वेशन मिलेंगे. अब दोनों का क्या करेंगे? कंपेयरिंग. सो न्यू लाइन, ए माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 3.8, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 4.8. ओके, ए प्लस ए 2a माइनस प्लस डेल्टा कट, एडिशन 4.8 प्लस 3.8 8.6. सो वैल्यू ऑफ ए 8.6 by 2 4.3. ओके, इस तरह से हमने वैल्यू ऑफ ए फाइंड की. अब दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में आप वैल्यू राइट कर दो, यानी आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा. नाउ पुटिंग ए इज इक्वल टू 4.3 इन इक्वेशन 2. कोई भी इक्वेशन में आप वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा. तो सेकेंड इक्वेशन इज ए प्लस डेल्टा 4.8. ए की प्लेस पे क्या वैल्यू रखनी है? 4.3 प्लस वैल्यू ऑफ डेल्टा इज नॉट गिवन. 4.3 पॉजिटिव है, राइट साइड ट्रांसफर करेगा, अपोजिट साइड क्या है गया? नेगेटिव. सो डेल्टा इज इक्वल टू 4.8 माइनस 4.3. सो वैल्यू ऑफ डेल्टा इज 0.5. चलो, हो गई आपकी दोनों वैल्यू ए एंड डेल्टा बोथ हो गई. नेक्स्ट फाइंड आउट फॉर द बोथ फॉर्म. कौन कौन से फॉर्म फाइंड करने हैं? सो नेबरहुड फॉर्म एंड मॉड्यूलस फॉर्म.
So first find out modulus form. So modulus form is equal to, in modulus, x minus a less than delta. So both value a and delta is given. So putting a is equal to 4.3 and delta is equal to 0.5. Okay, now next new line, write down in main question 3.8 less than x less than 4.8 is equal to, in modulus, x minus 4.3 less than 0.5. You are completed modulus form. Now next neighborhood form find out. So neighborhood form is equal to capital N in bracket a comma delta. Both values write down, putting a is equal to 4.3 and delta is equal to 0.5. Now next step, 3.8 less than x less than 4.8 is equal to capital N in bracket 4.3 comma 0.5. Okay, so you are completed for the question number 3, sub question number 1. Now next in question number 2. Okay, question number 2 is given 1.95 less than x less than 2.05. 1.95 less than x less than 2.05 between. Okay, so first of all comparing. 1.95 less than x less than 2.05 with interval form a minus delta comma a plus delta, we get a minus delta is equal to 1.95 first equation and a plus delta is equal to 2.05 for the second equation. Comparing both the equation, so new line, write down a minus delta is equal to 1.95 and new line a plus delta is equal to 2.05. A plus a, 2a, minus delta plus delta both are cut. 1.95 plus 2.05 total is 4. So value of a is equal to 4 by 2. Answer is 2. Now find the delta value. Equation second write down. So putting a is equal to 2 in equation 2. So second equation, a plus delta 2.05. Putting a is equal to 2, a की प्लेस पे 2 राइट किया. 2 opposite side transfer means negative. Delta is equal to 2.05 minus 2. Therefore value of delta is 0.05. check it. हो गए दोनों वैल्यू. Now both the form find out. First write down modulus form.
is equal to in modulus x minus a less than delta. We get a is equal to 2 and delta is equal to 0.05. Putting a is equal to 2 and delta is equal to 0.05. Now next new line, 1.95 less than x less than 2.05 is equal to in modulus x minus 2 less than 0.05. Done. Another form, find out neighborhood. So neighborhood form, capital N in bracket a comma delta. Putting values, putting a is equal to 2 and delta is equal to 0.05. Next step, 1.95 less than x less than 2.05 is equal to capital N in bracket 2 comma 0.05. Clear? So now you are completed for the question number 3, sub question number 2. Now next, in question number 3, ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया आपको, -0.4 लेस देन एक्स लेस देन 1.4. क्या दिया है, -0.4 लेस देन एक्स लेस देन 1.4. ओके, सो फर्स्ट कंपेयरिंग, so comparing -0.4 less than x less than 1.4 with interval form a minus delta comma a plus delta, we get a minus delta is equal to -0.4 equation 1 and a plus delta is equal to 1.4 for the equation 2. Comparing both equation, new line write down, a minus delta is equal to -0.4 and a plus delta is equal to 1.4. A plus a 2a minus delta plus delta cut, -0.4 plus 1.4, your answer is 1. So value of a is equal to 1/2, 0.5 value of a. Now next, putting e is equal to 0.5 in equation 2, second equation में वैल्यू राइट करेंगे. सो सेकेंड इक्वेशन, a plus delta is equal to 1.4, value of a 0.5 plus delta is equal to 1.4. 0.5 पॉजिटिव, राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव. सो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू 1.4 minus 0.5, डेल्टा इज 0.9. चेक इट. हो गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप, पुटिंग बोथ द फॉर्म. फर्स्ट फाइंड आउट मॉड्यूलस फॉर्म. is equal to in modulus x minus a less than delta, both values putting in equation. So now next step, putting a is equal to 0.5 and delta is equal to 0.9. Now next step, minus 0.4 less than x
less than 1.4 is equal to, in modulus form, x minus 0.5 less than 0.9. Your modulus form is over. Now next step, write down for the neighborhood form. So neighborhood form is equal to capital N in bracket a comma delta. फिर से वही वैल्यू राइट करेंगे 0.5 एंड 0.9. So next step, putting a is equal to 0.5 and delta is equal to 0.9. Now next step, minus 0.4 less than x less than 1.4 is equal to capital N in bracket 0.5 comma 0.9. Okay, so here question number 3, sub question number 3 is also completed. Now next, last question for the question number 3. ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है थर्ड में, 1.998 लेस देन एक्स लेस देन 2.002. 1.998 less than x less than 2.002. So first of all, comparing with interval form. So comparing 1.998 less than x less than 2.002 with interval form a minus delta plus comma a plus delta, we get a minus delta is equal to 1.9998 for the equation 1 and a plus delta is equal to 2.002 equation 2. Comparing first and second equation, a minus delta 1.998, यहाँ पे एक 0.9 ज़्यादा ऐड कर दिया है मैंने, एंड न्यू लाइन ए प्लस डेल्टा 2.002. ए प्लस ए 2a माइनस प्लस डेल्टा कट, एडिशन 2 + 2 4 हो जाएंगे. सो वैल्यू ऑफ ए 4/2 इज इक्वल टू 2. नाउ नेक्स्ट स्टेप, putting a is equal to 2 in second equation, equation 2. So write down equation 2, a plus delta is equal to 2.002. Value of a write down 2. So 2 plus delta is equal to 2.002. 2 पॉजिटिव है, अपोजिट साइड जाएंगे तो क्या नेगेटिव. सो डेल्टा इज इक्वल टू 2.002 minus 2. Therefore delta is equal to 0.002. Okay, now next both the form find out. First modulus form. In modulus x minus a less than delta, putting value a and delta, putting a is equal to 2 and delta is equal to 0.02. Now next step, write down 1.998 less than x less than 2.002 is equal to, in modulus x minus 2 less than 0.02. Okay, and next form is a interval यानी कि neighborhood form. So neighborhood form
is equal to capital N in bracket A comma delta, putting both value A and delta. So now next step, putting A is equal to 2 and delta is equal to 0.002. Now next step, 1.998 less than x less than 2.002 is equal to capital N in bracket 2,002. So here completed for question number 3. Exercise 4.1 question number 3 is completed.